कुछ इसमें simulation can be applied to almost all the areas that we have studied, including inventory, replacement, waiting line, सभी के लिए. अब कई बार क्या होता है, आपके पास में एकदम perfect information available है, इसलिए आप उसको solve कर सकते हो. But अगर आपके पास में perfect information available नहीं है, तो then the only way out is to simulate it and work it out. Okay. So what we'll do is we'll look at simulation, how it can be used. So scenario आपको दिया हुआ है. With the help of a single serving queuing model having inter-arrival and service time constant at 1.4 minutes and 3 minutes respectively. So this says that customer का inter-arrival time कितना दिया हुआ है? 1.4 minutes. What about the other information? सर्विस टाइम, मतलब हर एक कस्टमर को सर्विस करने के लिए कितना टाइम लगने वाला है. तो सर्विस टाइम इज गिवन एज, आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल, करेक्ट? यस सर. फाइन. नाउ एक्सप्लेन डिस्क्रीट सिमुलेशन टेक्निक taking 10 minutes as the simulation period. So now my simulation period is going to be 10 minutes only. So अभी यहाँ पर हमको क्या क्या चीज लगेगी? सबसे पहला चीज कस्टमर अराइवल, करेक्ट ना? दैट मीन्स कौन सा कस्टमर आ रहा है, कस्टमर का कस्टमर नंबर 1, कस्टमर नंबर 2 एंड सो ऑन. सो यहाँ पर मैं जस्ट इसको कस्टमर लिख रहा हूँ. सो वी कैन हैव कस्टमर 1, कस्टमर 2 एंड सो ऑन. देखेंगे कितने आते हैं. फाइन. कस्टमर का अराइवल टाइम, दैट मीन्स व्हेन द कस्टमर हैज कम इन. सो अगर मैं सिंस इट इज द स्टार्ट ऑफ द सिस्टम, तो हम उस हिसाब से उसको देखते जाएंगे. फिर कस्टमर के आने के बाद में, ओके, लेट मी से थोड़ा सा सर्विस इन, सर्विस आउट, मतलब कब वो सर्विसिंग के लिए he was taken in and when his service got over. तो सर्विसिंग इन एंड सर्विस आउट टाइम. तो आप इसको चाहिए तो इन टाइम, आउट टाइम. फाइन. Was there any waiting time for the customer? इसको मैं चाहिए तो ऐसे लिख देता हूँ, कस्टमर वेटिंग टाइम. फाइन. एंड आई से मशीन और सर्वर आइडल टाइम. ठीक है, जो सर्विस कर रहा है, जो सर्विस दे रहा है इज कॉल्ड एज अ सर्वर. ओके, सो सर्वर आइडल टाइम. नाउ ये मेरे पैरामीटर्स है जो मेरे काम के रहेंगे. ओके, एंड दीज आर द system tracking parameters. Now your customer will come, okay, at what time? The minute your system starts. So that means at t equals to 0 से हम शुरू करते हैं. Fine. At t equals to 0 my customer arrives. So आपका सर्विस इन टाइम क्या रहेगा?
it would be the same, 0. Hello. Yes, sir. Okay. Now, when the what would be the service out time? 3. It would be 3. in time प्लस आपका जो सर्विसिंग के लिए जो 3 मिनट्स का टाइम फिक्स है वो, so total service out time would be 3. Very good. Was the customer waiting at any point of time? No. Correct. So there was no waiting time for the customer. Was the server idle at this point of time? Just system चालू कर रहे हैं, आपने अपना सर्विसिंग मतलब अपना जो फैसिलिटी है वो चालू किया, तो in the very first beginning itself, this same time हम assume कर रहे हैं कस्टमर आया. Okay, कस्टमर आया, immediately there is no waiting time for the customer, there is no idle time for the machine also. Now, what would be the arrival time for your next customer? 1.4. Correct. So this plus 1.4. So now the next customer will arrive at 1.4. Can he be taken in for servicing at 1.4? No. Because the machine itself is busy. When the machine is busy, so that means ये दोनों वैल्यूज में से जो भी मैक्सिमम होगा मैं उसको लूंगा, या फिर सीधा सीधा हम मैनुअली डाल देते हैं भाई 3. ठीक है, अगर ये या फिर आप ये maximum of this comma this one, automatically it will come out to be as 3. Now your service out time would be how much? Service out time? Sir, 6. 6. Because the servicing has started at 3, service out time would be 6, which is this plus your service time. Previous. What about your customer waiting time? Was your customer waiting? उसका सर्विस कब स्टार्ट हुआ minus arrival time is the customer waiting time, correct? The customer was waiting for 1.6 minutes. बराबर है? Yes? So, Okay. Now, 1.6. yes, please tell me. So how did 1.6 come? एक सेकंड. I hope So, not audible. I hope the background noise is reduced. Yes, sir. Yes, sir. Now, when I look at this, okay, so my customer has came in at 1.4 minutes and he was offered service starting from 3 minutes onwards. So that means customer was waiting from 1.4 up to 3. Correct, na? Yes, sir. Got The it. difference between this time is your customer's waiting time. Is your machine waiting at any point of time? No, sir. It started servicing
at 3 and has finished servicing of the previous one at 3, there is no waiting time for the server. Let us look at the third customer. What would be arrival time for him? Inter-arrival time is 1.2 minutes. 1.4 plus 3. No, 1.4 plus 1.4. Every customer is arriving at an interval of 1.4 minutes. So पहला 0 पे आया, दूसरा 1.4 पर आएगा, तीसरा 2.8. Correct, na? Yes, sir. Yes, sir. So he will come at 2.8. What about his service in time? So that 6. will be 6. 6, which is the maximum of this service time of the previous one or this. Okay, so इस तरह से आपको ये 6 मिलेगा. उसका सर्विस आउट टाइम कब होगा? 9. 9. What about his waiting time? 6 minus 2.8. 2.8. That comes to 3.2. 6 minus 2.8 is 3.2. What about this one? Machine or server idle time 0. 0. was 0. So there was no waiting time for the server. Server was continuously on. Let us look at the fourth customer. When will he arrive? When will your customer arrive? 4.2. 2.8 plus 1.4, which is 4.2. Very good. So when will he be taken in for servicing? So 12. 9. 9. 9. He will be taken for servicing at 9th minute. When will his servicing be over? 12. 12. What about his waiting time? 9 minus 4.2. Minus 4.2, which is 4.8. Is the machine idle at any point till now? No. No, sir. No, it was not. It was asked that we have to simulate it only for 10 minutes. Already 10 minutes are over. But at this juncture, what will happen with the other customers who would have already came into the system? They will not be there in the system till 8 customers will be there in the system, correct? So by the end of 10 minutes, 8 customers would have been there, out of which ये भी 12 मिनट पर खत्म हो रहा है, तो ये हाफ प्रोसेस्ड रहेगा and only 3 customers were fully processed. Correct? So we were able to service only 3 customers. Fourth customer was undergoing processing, and customer number 5, 6, 7, 8, that means 4 customers were waiting in the queue to get serviced. Clear? Yes, sir. So this is how you actually simulate. At one point itself, you can come to know exactly what would be the performance of your system. Now, this very clearly says that service time of 3 minutes and an inter-arrival time of 1.4 minutes is something which will load my system very heavily. Will it be fine if I have a service time of 2 minutes?
at least my performance will increase, correct? 10 minutes में मैं इतने customers पूरे service कर लूंगा 5 तक. But वहीं पर अगर ये 3 minutes ही रहता है तो I will be able to service only 3 customers completely and 4th one half. Correct? Yes, sir. So आपको हमेशा ये देखना है कि मतलब simulation will help you in terms of visualizing the performance of your system even before it is implemented. It is like playing a game, a virtual game. Okay. काफी लोगों ने वर्चुअल गेम्स तो सभी लोग खेलते हैं ना, जो मोबाइल में है वो सारे वर्चुअल Yes, गेम्स. sir. करेक्ट. आप में से कितने लोगों ने क्लास में बैठ के क्रिकेट खेला है? क्लास में बैठ के, हाँ, क्लास के अंदर रह के हाँ सर, स्कूल में खेला है ना? कैसे खेला था? सर नोटबुक में नंबर्स रहता है, वी ओपन द Correct. नोटबुक रैंडमली. सो आप लोग नोटबुक से करते थे, हम लोग टेक्स्ट बुक से करते थे, क्योंकि हमारी नोटबुक्स में नंबर्स नहीं होते थे. सॉरी, टेक्स्ट बुक ओनली. आई एम सॉरी. टेक्स्ट बुक, हाँ. तो आप टेक्स्ट बुक में से सिर्फ आप उसको ऐसा फ्लिप करते हो, लास्ट डिजिट यू कंसिडर इट एज द स्कोर. दैट मीन्स उतने रन आए, 0 आया तो मतलब आउट हो गया. करेक्ट? यस सर. दिस इज आल्सो एक्चुअली सिमुलेशन. Okay, so what we are talking about is simulating an environment and checking its performance in advance. Okay, this is what the simulation is all about. अभी already आप लोगों को business simulation आप लोग कर रहे हो ना? Yes, sir. वो भी वही हो गया. Actually system आप नहीं run कर रहे हो, but you are just simulating it. Okay, so that is what simulation is all about. So this tells us that 3 minutes of service time is not sufficient enough. So either I should have 2 servers or I should have a faster server. That means whoever is servicing the customers should be fast enough. Fine. Clear? Yes, sir. यही अगर मान लो इंटर अराइवल टाइम कम होता, मतलब इतना कम ना हो करके थोड़ा सा ज्यादा होता था, मान लो 2 मिनट्स का होता, तो शायद उतना ज्यादा लोड नहीं होता था. नहीं, फिर भी करीब करीब वही आ रहा है. इंटर अराइवल टाइम मान लो 3 मिनट्स होता, फिर प्रॉब्लम नहीं थी, वो बराबर उसी हिसाब से चल रहा होता था. और अगर ये और ज्यादा होता, मतलब 5 मिनट्स में अगर आ रहे होते तो फिर प्रॉब्लम थी. 10 मिनट में हम सिर्फ 2 ही प्रोसेस कर पाए, थर्ड वाला सिर्फ अराइव हुआ है. सो दिस इज हाउ सिमुलेशन हेल्प्स अस. एक्सेल में ये जो हमने बनाया है, ये एक सिंपल सा मॉडल है जहां पर कि you are only just changing these parameters and you are checking the performance of the system. Okay, this is how simulation helps. Let us take up some. This was only just for understanding exactly how the system works. Let us take up the second one. Okay.
Just a second. Putting the question on the same screen so that it's easy for connect. Right. Now we'll just try and put this up. इसमें आपको क्या क्या चीज लगेगा? A 1 2 3 4 and so on. अभी इसमें कुछ रैंडम नंबर्स दिए हुए हैं फॉर एक्चुअली यूज फॉर सिमुलेशन. सो बिफोर वी डू दैट, ठीक है, जस्ट एक वर्कआउट कर लेते हैं. हमारा क्या रहेगा? A1 random numbers equivalent production per day, right? और उसके बाद में equivalent production के बाद में आप equivalent production हो गया. आपका 200 mopeds का इधर पर a company manufactures around 200 mopeds depending upon the availability of raw materials and other conditions. The daily production has been varying from 196 mopeds to 204 mopeds, whose probability distribution is as given below. तो आपको ये दिया हुआ है. So that means out of a total of a probability दिया है. So that means out of 100, 5 times it has happened that 196 mopeds were produced. 9 times it has happened that 197 mopeds have been produced, and so on. So आपको उसी हिसाब से इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आप कितना कर रहे हो. Mopeds dispatched and how much is there in the inventory. तो आप चाहो तो इसको opening inventory, closing inventory भी डाल सकते हो, and then we say empty space in the lorry. ये कुछ चीजें जो हमको इधर पर कैप्चर करनी होगी. तो आपके पास में ऑलरेडी कुछ रैंडम नंबर्स दिए हुए हैं, उनको हम देखेंगे कि उसको कैसे यूज करना है. सो व्हाट फर्स्ट थिंग दैट विल डू इज विल जनरेट रैंडम नंबर्स, और वो रैंडम नंबर्स का मीनिंग क्या है दैट वी नीड टू फर्स्ट डिफाइन. सो अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा रैंडम नंबर्स स्टार्टिंग रैंडम नंबर और उस रेंज का एंडिंग रैंडम नंबर, तो हर एक के लिए मेरे को इंडिकेट करना पड़ेगा कि उसका क्या मीनिंग क्या है. अभी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है 5, 9 एंड सो ऑन. इट इज एग्जैक्टली लाइक अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक बैग में 100 बॉल्स हैं, ठीक है, तो उसमें से अगर मुझे एक बॉल निकालना है, ओके, तो 100 में से अगर मैं ये बोलता हूँ कि
उस हर एक में अलग अलग नंबर्स लिखे हुए हैं. फाइन. हर एक बॉल में अलग अलग नंबर्स लिखे हुए हैं. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल दैट आई पुल आउट, ओके, विल बी नंबर 1? 100 बॉल्स हैं. 100 बॉल्स में से मैं एक बॉल निकालता हूं, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा फॉर इट टू बी नंबर 1? उसका चांस तो सिर्फ एक ही है ना, एक ही बॉल है. सो 1 आउट ऑफ 100. Yes, sir. तो दैट मीन्स उसका प्रोबेबिलिटी 1% रहेगा. अब यहाँ पर 196 के लिए प्रोबेबिलिटी दिया है 5%. मतलब 5. अगर मैं ये बोलूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आई पुल आउट अ बॉल नंबर्ड बिटवीन 1 to 5. व्हेन आई से 1 to 5, मतलब 5 बॉल हैं. 100 में से इन 5 में से ही कोई एक निकलनी चाहिए. सो माय प्रोबेबिलिटी वुड बी 5%. हेलो, am I audible? Yes, sir. This yes was for the first You're question or audible, the sir. second question? I am audible. What is the probability of a ball which is being pulled out from the bag will have number between 1 to 5 out of 100 balls? 5 out of 100, that is 5%. Yes. So यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप ये जो परसेंटेज है उसी हिसाब से इनको सबको ब्रेक कर दोगे. सो 5%, हम नंबर्स विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से लेकर के एंडिंग नंबर अगर मैं 5 लेता हूं, तो द प्रोबेबिलिटी विल ऑटोमेटिकली बी इक्वल टू 5%. ठीक है. द प्रोबेबिलिटी विल बी 5%. करेक्ट. अब इसके बाद में का जो नेक्स्ट नंबर्स लेता हूं 6 से लेकर के, ओके, इसके आगे मेरे को 9% तक लेना है. ठीक है. मैं हर एक का इसी हिसाब से ले लेता हूँ. 5, नेक्स्ट इज 9, नेक्स्ट इज 14, नहीं सॉरी 12, then 14, then 20, 15, 11, 8 and 6. अगर मैं इनको सबको ऐड करूं, दिस विल कम आउट बी एज 100. तो ये बराबर है. अभी मुझे उसी हिसाब से अगर इनको ब्रेक करना है ताकि मेरा प्रोबेबिलिटी भी उसी हिसाब से रहे, हाँ, तो हम क्या करते हैं, विल वर्क आउट क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी सो दैट विल हेल्प मी इन अंडरस्टैंडिंग लास्ट का नंबर क्या होना चाहिए. तो इट वुड बी यहाँ पर 5. दिस वन वुड बी दिस 5 प्लस दिस 9. करेक्ट. यहाँ पर इट वुड बी this 14 plus this 12, and if I drag it across, लास्ट में मुझे 100 आना चाहिए, मतलब बराबर. so that means अगर मैं 6 से लेकर के नंबर लेस देन मतलब up to 14 तक का लूंगा तो it would be 9. इसके बाद वाला मैं अगर एक्चुअली ये 5 नहीं होना चाहिए, this would have been 2 4 क्योंकि मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ ना. तो 0 1 2 3 4 becomes 5 numbers, and this will be 5 2 instead of 14 13. Here it would be how much, ये जो भी नंबर है प्लस 1 and up to how much, कितना तक, तो कुछ बोलता ही नहीं है.
कि मैं एक कम ले रहा हूं तो आई कैन जस्ट से, या फिर इक्वल्स टू दिस प्लस तो मेरे रैंडम नंबर्स को मैं उसका कुछ एक फिजिकल मीनिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अभी जिसका जिसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ था, हियर इट इज, it corresponds to 196 production. दूसरा it is 197, 198 and so on. 197, तो इस टेबल को हम लोग यूज करेंगे यहाँ।